everyone. Welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to take the class on daily news analysis for 6th of November 2020. आप सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। आज हम 6th of November 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिकोड करने जा रहे हैं। I hope you already have read the newspaper and you have made notes also accordingly. This is the time for you to verify that the topics that you have covered from the newspaper are they on the lines of UPSC CSE syllabus or not. जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है, जो भी आपने आर्टिकल्स तैयार किए हैं, क्या वो UPSC CSE के सिलेबस के लाइंस पर हैं या नहीं, ये आपका टाइम है वेरीफाई करने का. And also, did you cover all the important information on that article or did you miss out something? So that also we are going to cover. वो भी आज हम कवर करने जा रहे हैं. आप वेरीफाई कर सकते हो. These classes are not to spoon feed you. मेरी जो क्लासेस होती हैं वो आपको स्पून फीड करने के लिए नहीं होती हैं. मेरी क्लासेस के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उस बेस मिल जाए और आप अपना जो बिल्डिंग है उस बेस पर खुद बना सकें. राइट, आई जस्ट एम हियर टू पुश यू टू मेक योर नोट्स योरसेल्फ, टू गिव यू द help, the necessary push to help you to self study in a better and efficient manner. Okay, so let's start the class. Before starting the class, here's a small announcement for all of you. As you all know that UPSC CSE complete preparation batch courses are being started on Unacademy Plus platform from 9th of November 2020. 9th November 2020 से UPSC CSE का complete preparation batch course start हो रहा है and I am going to teach modern Indian history and medieval Indian history in the batches, in the English batches and the Hindi batch as well, right? Not the Hindi, bilingual batch, right? तो bilingual batch में और English batch में मैं modern Indian history और medieval Indian history topics पढ़ाने वाली हूँ. So if you're interested in joining these batches, you can subscribe today. आप subscribe कर सकते हो and also you can get 10% discount if you use this code Sharma YT10. अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको easily 10% discount भी आपके सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा, right? So you can subscribe to Unacademy Plus batches, right? And there will be one subscription, unlimited benefits. You will get one-stop solution for complete UPSC CSE preparation. So you can try these batches out. Free classes आपको मिलती रहती हैं. आप batches में अगर enroll करना, guided preparation चाहते हो करना, तो आप इन batches को join कर सकते हो. Now the link is given below in the description box to join these batches. You can use this code Sharma YT10 to avail 10% discount also. Let's start the session now. The first important topic is Biden edges closer to victory as Trump mounts legal challenges. So as you all know, you must have been, witnessing this presidential election which is going on right now in US. US में जो presidential election चल रहा है, आप इसको देख ही रहे होगे, नजर रख रहे होगे, right? Joe Biden is leading the score. जो बिडेन जो है वो लीड कर रहे हैं, इज गेटिंग मैक्सिमम वोट्स राइट नाउ एंड ट्रम्प थोड़े से पीछे रह रहे हैं, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इज आल्सो गेटिंग अ लिटिल एजिटेटेड, राइट? सो दीज आर 59th quadrennial presidential elections and it is to be noted that the US election system is much different from that of India. US का जो इलेक्शन सिस्टम है वो इंडिया के इलेक्शन सिस्टम से काफी डिफरेंट है. इट्स लॉट ऑफ डिफरेंट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? यूएस में वी ऑल नो दैट देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, right? But yeah, India mein it's parliamentary form of government that we are running in India, right? So this is the basic difference to start with. This is because the framers of Indian Constitution they opted for parliamentary form of government in India in the same lines of Britain. जैसे कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में parliamentary form of government है ना, India has also adopted the same. But in USA it is the opposite. It is presidential form of government. So the president over there is of lot of importance. Okay. Now moving ahead, the US has had an elected president since its constitution went into effect in 1789. So another point that you need to remember for prelims is that the constitution of US came into effect in कौन से ईयर में आया? 1789 में आया, ठीक है? अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनलाइक इन मेनी कंट्रीज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएस इज रादर अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस. अब यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना वो 1 साल का प्रोसेस होता है. इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दे अनाउंस देयर कैंडिडेचर. पहले तो हमें पता चलता है कौन कौन से लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, उसके बाद पार्टीज का पता चलता है, देन नॉमिनेशंस एंड ऑल ऑफ दीज, राइट? उसके बाद होता क्या है, देन द प्रमोशंस आर गोइंग ऑन, दे ट्राई टू ब्रांड
present themselves, etc. And then finally the election process starts and the results are announced. Okay, so this news comes in your GS paper 2 comparison of Indian constitution category. GS paper 2 में एक टॉपिक है ना सिलेबस पे, comparison of Indian constitution, तो इसके अंदर ये आता है, ठीक है, ये टॉपिक आता है. सो इट इज रिलेवेंट फॉर GS पेपर 2. ठीक है, तो ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा आज. नाउ लेट अस डेल्व फर्दर इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. नाउ एन इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इट हैपेंस एवरी 4 years. हर साल 4 साल में इलेक्शन होता है. एंड द वेरी क्यूरियस थिंग अबाउट दिस इलेक्शन इज, very exciting thing about this election is that it is held on the first Tuesday after the first Monday in November. नवंबर का जो पहले मंडे होता है ना, उसके बाद जो ट्यूसडे आता है, पहला ट्यूसडे होता है, उस दौरान के इलेक्शन किया जाता है. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. सो दिस इज अगेन, इसके पीछे भी एक राज है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस एज वेल. सो व्हाई ट्यूसडे ऑफ नवंबर, नवंबर के ट्यूसडे को ही क्यों होता है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क. व्हेन वोटर्स यूज्ड टू ट्रैवल टू द पोल्स बाय हॉर्स इन द अर्लियर डेज, ट्यूसडे वाज एन आइडियल डे बिकॉज इट अलाउड पीपल टू वर्शिप ऑन संडे, राइड टू देयर काउंटी सीट ऑन मंडे एंड वोट ऑन ट्यूसडे ऑल बिफोर द मार्केट डे, दैट वाज वेडनेसडे. Market day means when the business proceedings, everything, the day-to-day work used to start, right? That is why it is conducted till today on Tuesday. Tuesday को इसलिए होता है क्योंकि संडे को वर्शिप डे होता है, उसके बाद मंडे को वो अपनी काउंटी सीट तक आते हैं, फिर वोट करने जाते हैं ट्यूसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को मार्केट डे होता है, सारे मार्केट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं. तो इस वजह से ट्यूसडे को पिकअप किया गया इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए. प्लस नवंबर ऑल्सो फिट्स बिटवीन हार्वेस्ट टाइम एंड हार्श विंटर वेदर. सो इट इज अ माइल्ड मंथ जहां पर थोड़ा कंफर्टेबल होता है लोगों के लिए, राइट? तो इसीलिए ये ट्यूसडे को कंडक्ट किया जाता है. ठीक है. नाउ हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड. इलेक्शंस कंडक्ट कैसे होते हैं? द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड, दैट इज यू ऑल नो द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर. सिंस 1845 दिस डे हैज बीन फिक्स्ड. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स, 1845 से ये डेट फिक्स कर दिया गया है. एंड देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी इन यूएस लाइक इंडिया. इन इंडिया यू हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, ECI है ना यहाँ पर, बट देयर इज नो फिक्स्ड इलेक्शन सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी इन यूएस. यूएस हैज 2 फेडरल बॉडीज. यूएस में ना 2 फेडरल बॉडीज है. फर्स्ट इज FEC एंड सेकंड इज EAC. FEC इज फेडरल इलेक्शन कमीशन, EAC इज यूएस election assistance commission, and both of them together they work and they do not add up to anything as powerful or effective as election commission India. जैसे election commission यहाँ पर जितनी पावर उसके पास है ना, इतनी पावर या इतना इफेक्टिव वहाँ की ये 2 फेडरल बॉडीज नहीं है. they have no control over the election administration only, right? बस नाम की फेडरल बॉडीज हैं, बट ये इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई इनका कंट्रोल नहीं रहता. द रोल इज to to do the federal campaign and to maintain the regulations and rules of the finance of federal campaign. जो भी campaigns होते हैं उसके finance के से related regulations बनाती हैं ये bodies. ठीक है. और ये जो US Election Assistance Commission है ना, EAC, it is also bipartisan organization. It was created only in 2002 to provide funding to states for upgrading their registration and voting systems. And over here the FEC, it has 6 members, 3 each appointed by 2 political parties. Decision is required, right? Basically यहाँ पर जो भी decision होता है, it requires 4 votes. If you want to finalize any decision, you require 4 votes, right? And all 50 states and within these more than 3,000 counties have different management bodies. So there is no fixed central management body when it comes to elections in US. Okay. These facts are very important for your prelims. So what is the requirements for presidential candidates? अगर आपको US में presidential candidate के तौर पे खड़ा होना है तो requirements क्या है? First of all, the president must be a natural born citizen of US. US का natural born citizen होना चाहिए. Highlight this word, natural born citizen of US, and be at least 35 years old. That means the minimum age limit should be 35 years, and he should have been a resident of US for 14 years. 14 साल का से US का रेजिडेंटशिप उसके पास होना चाहिए. एंड ही और शी मस्ट मीट द एज and residency requirements by inauguration day. Any person who meets these requirements can declare his or her candidacy for the president at any time. And all India में ना there is a difference when we compare to this requirements of being a president. In India, president can also be a naturalized citizen. राइट ऐसा नहीं है कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, नेचुरलाइज सिटीजन भी हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिटीजनशिप कंडीशंस राइट इन अ वीडियो. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ओवर हियर इन द आई बटन. मैं आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सिटीजनशिप के ऊपर हमने जो चैप्टर किया था
Also, a candidate to be nominated for office of president needs 50 electors as proposers. Proposers means who will propose his name. तो ऐसे 50 electors उसके पास कैंडिडेट के पास होने चाहिए जो उसका नाम ही प्रपोज करेंगे. And 50 electors as seconders. Seconders means who will second this proposal, जो कि इस proposal का समर्थन करेंगे. In the US, a person can be the president for only 2 terms, but there is no such bar in India. इंडिया में प्रेसिडेंटशिप के ऊपर कोई बार नहीं है, राइट? बट वहां पर सिर्फ 2 बार ही आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, 2 terms ही आपके हो सकते हैं, राइट? Now, once a candidate raises or spends more than $5,000 for their campaign, they must register with the Federal Election Commission. FEC regulates the finances, na? So that is why if you have, if the candidate raises more than $5,000 in the expenditure of his promotion or in campaign, then he has to register himself with the FEC. It includes naming a principal campaign committee to raise and spend the campaign funds. तो अगर $5,000 से ज्यादा खर्च करोगे कैंपेन पे तो आपको खुद को FEC पर रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. अगेन these are not important for mains but for prelims. Now let us have a look at the election process. Election process को देख लेते हैं जरा. Article 2 of US Constitution originally established the method of presidential elections. वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कौन से आर्टिकल के तहत स्टार्ट हुआ, स्टैब्लिश हुआ? आर्टिकल 2, राइट? एंड हियर जनरली वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू वोट ऑन अ बैलेट वेयर दे सेलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. तो वोटर्स जो है अपने चॉइस के कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, बट ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है बिकॉज हियर वोटर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, they are electing the representative of the president who are known as electors, or then those electors will recommend the name of the or vote for the name of the candidate who is standing for the position of president. तो ये हो गया आपका candidate. This is the candidate who wants to become the president. He will appoint 50 electors. ठीक है, ये इसके representatives होंगे. These 50 electors will be the representatives of, ठीक है, this particular candidate. For example, this is Joe Biden and this is Donald Trump. He has his electors, right? इनके electors हैं and these electors are proposing the name of this candidate, right? To become the next president. Now these 50 electors, people will vote for them. लोग जो है वो इन electors के लिए vote करेंगे, ठीक है? And if, for example, Joe Biden's electors win the election, then they will propose the name of the candidate, that is Joe Biden, and the seconders will support this particular proposal and then Joe Biden will become the president. ठीक है, तो ये electors के ऊपर भी depend करता है कितने किसके ज्यादा electors जीतेंगे, because these are the representatives. Clear? Now also most state laws establish a winner take all system. By this, a number of electors from each state are not allocated to each candidate based on their vote share. The candidate with the most votes gets every elector of the state. समझ आ गई बात? जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा वोट्स हैं वो इलेक्टर्स को इलेक्ट करेगा हर एक स्टेट से टू रिप्रेजेंट हिम. The number of electors in each state is equal to number of members of Congress to which the state is entitled. So this is the whole procedure of the election process. वैसे individually, if I put my opinion, it's a very unique system and it's a very, you can say intriguing system, right, of elections in US. Coming on to the next point, the details of the entire system. The US president and vice president, we all know they are not directly, elected by the citizens. In the case of US, there are 50 electors, right, who are proposing the name of the candidate and the people are voting those 50 electors, right? They are chosen by electors through a process called the electoral college. इसी को हम electoral college कहते हैं, जो आप M. Lakshmikant के chapter president में भी पढ़ोगे. In M. Lakshmikant also there is a chapter on president. There you will be studying that over there. The process of using electors comes from the US Constitution, right? तो ये point again आपको पढ़ना है prelims के लिए, ठीक है? Coming on to the next important article, Congress kicks off tractor protest against farm bills. Farm bills again and again they are in news. Let us again recollect what are these, what is this issue all about.
Now there are strong protests which from the sides of farmers which are going on, and also the opposition is involved from the states of Punjab and Haryana against the three farm bills which were passed on June 2020 to replace ordinances issued in June 2020. तो ये जो फार्म बिल्स तैयार किए गए थे जो कि जून 2020 के ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए तैयार किए थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं. What are the issues which are raised by the farmers? Because we have studied the farm bills in detail, right? हमने farm bills already हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में डिटेल में पढ़ा है. So what are these protests which are right now going on, and what are the issues that are raised by the farmers? First issue that they are raising is lack of consultation, right? They are saying that first the ordinance route, now the government is passing this bill without proper consultation, because of which the farmers are mistrusting the government and the stakeholders, right? तो which are involved in this bill. तो बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि पहले तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आप फटाफट से बिल पास कर रहे हैं, तो प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो रही है. देयर इज नो प्रॉपर कंसल्टेशन, बिकॉज ऑफ विच देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. And they are allowing trade zones to come up outside the APMC area. In the farm bills you must have studied कि APMC area के बाहर trade zones लेकर आ रहे हैं कि either you can sell your produce through the trade zones or through the APMC, that is on the farmers. Farmers are becoming apprehensive of the new system. They are saying that if we are selling our produce outside the APMC area, then we will not be eligible for minimum support price. And if we are exiting the minimum support price, they are not giving us the MSP, right? MSP पे नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा, लूट होगी, तो हमें पागल बनाया जाएगा, right? हो सकता है जो प्राइस है उससे ज्यादा पे, उससे कम पे खरीदा जाए, right? हमें पता नहीं किस तरीके से हमें घुमाया जाएगा. So they are saying that these trade zone areas are the you can say आप ये कह सकते हो they are misinterpreting this, or the government is not clarifying what is this exactly the trade zones, and if their MSPs will be saved or not. So there is a confusion in the hearts of the farmers regarding this trade zone area. Second reason is non-favorable market conditions. While retail prices have remained high, data from WPI suggests declaration in farm gate prices for most agricultural produce. Now we all know that farmers, when their input cost is rising, they do not see the free market based framework providing them the remunerative prices. जब उनका कॉस्ट बढ़ने लगता है तो उनको लगता है कि जो प्राइस हमें मिल रहा है वो कम ही है, रेम्यूनरेटिव नहीं है. तो फार्मर्स का कहना ये है कि रिटेल प्राइसेस हमेशा हाई ही रहे हैं. और अगर हम WPA का डेटा देखें तो उस केस में भी बहुत से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऐसे हैं जिनका प्राइस हाई है, जिसका रिटेल प्राइस हाई है. रिटेल प्राइस हाई रहेगा, इनपुट कॉस्ट ज्यादा रहेगा, तो इससे क्या होगा, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस उनको नहीं मिलेंगे. हाउ विल दे बी एबल टू कवर देयर इनपुट कॉस्ट, राइट? सेकेंडली दे आर सेइंग देयर इज एब्सेंस of regulation in non-APMC mandis. Another issue which is raised by farmers is that proposed bills give the preference for corporate interest at the cost of farmers interest. वो ये कह रहे हैं कि preference and priority is given to the corporate interest, right? So our interest is at the, you can say, back end or at the back of the mind of the government. So there is no regulation in non-APMC mandis. So farmers may find it difficult to deal with corporates as they operate on the motive of profit seeking only. So farmers are scared of getting, you can say, cheated by the corporates, right? So these apprehensions, this could corporatize agriculture. Basically ये कह रहे हैं कि agriculture को आप corporatize कर रहे हो. You are threatening the current mandi network. You are diluting the MSPs, the procurement of the products at the guaranteed prices. These are the issues which are raised by farmers. इधर government को step in करना चाहिए और farmers के एक एक doubt को clarify करना चाहिए, solve करना चाहिए. Here my opinion is government should step in and clarify each and every doubt and apprehension in the mind of the farmers, so that everything, all these protests in the current pandemic, which is very risky for their health also, will be stopped. Okay, do let me know in the comment section what your opinion is. Comment section में मुझे बताइएगा आपका opinion क्या है, right? As government आप कैसे चीजों को solve करना चाहेंगे. Let's move forward now. Now let us understand what are the three bills. ये bills है क्या, ये समझते हैं. The bill aim to change the way agricultural produce is marketed, sold and stored across the country as per the statement given by the government. Government की ये कोशिश है इस बिल को पास करने में कि इस बिल के थ्रू कि वो एक पूरे कंट्री में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जिस तरीके से मार्केट किया जाता है, बेचा जाता है या स्टोर किया जाता है, उसको चेंज करे, उस वे को चेंज करे, रेगुलेट करे. So these bills were initially issued in the form of ordinances and then very hastily they were converted into bills, right? Now they were then passed by voice vote. Now here this is
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स। देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आप न्यूज में पढ़ते हो ना, व्हेन यू स्टडी इन बिटवीन द लाइंस, दैट हेल्प्स यू टू हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिलिम्स, राइट। वॉइस वोट आपको पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आज आपका होमवर्क है। व्हाट इज वॉइस वोट, व्हाई इट इज यूज्ड, क्या है ये और क्यों यूज किया जाता है। Okay, so it was passed by voice vote in both Lok Sabha and Rajya Sabha during the delayed monsoon session this month. And also another thing that you need to study for GS paper 2 and prelims is how a bill is passed. Bill pass कैसे किया जाता है, ठीक है। Now the other issues which are raised in this bill is that एग्रीकल्चर फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है। सो पीपल आर आर्ग्यूइंग दैट सेंटर शुड नॉट बी मेकिंग लेजिस्लेशन ऑन दिस सब्जेक्ट एट ऑल व्हेन इट इज फॉलिंग अंडर द स्टेट लिस्ट। जब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंटर को कहां से हक मिल गया इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने का अकेले, राइट। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एक और पॉइंट मिल गया आपको प्रीलिम्स के लिए। Also, the people are concerned about the loss of revenue from mandi taxes and fees because they are establishing ट्रेडिंग जोन्स आउटसाइड द मंडी एरिया। अब भाई मंडी एरिया के बाद ट्रेडिंग जोन्स खोल दोगे आप तो मंडी टैक्सेस का क्या होगा, वहां से जो फीस आती है वो कैसे कलेक्ट होगी, राइट। स्टेट्स को लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट्स को। एंड पैडी फार्मिंग हैज रिसीव्ड अ मेजर बूस्ट विद प्रोक्योरमेंट एट एमएसपीज। इफ यू आर ट्रेडिंग अलाउइंग देम टू ट्रेड इन ट्रेडिंग जोन्स एंड कॉर्पोरेट्स आर गेटिंग द एडवांटेज, नो द एमएसपीज आर नॉट प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, देन what will happen to the farmers? There's you can say their anger is justified in that case. Their incomes will be at stake, right? So these are the issues which are highlighted by the farmers, and that so hence they are protesting, and also the opposition is also joining them in their protest. Coming on to the next important article, all insults not offence under SC/ST Act. So in a judgment, Supreme Court has said that all the insults or intimidations to persons belonging to the Dalit or tribal communities will not be an offence under SC/ST Act. SC/ST Act में अगर दलित या ट्राइबल कम्युनिटीज के खिलाफ कोई भी इंसल्ट या इंटिमिडेशंस होती हैं तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस अंडर द SC/ST Act. Because offense under the act is not established merely on the fact that the complainant is a member of SC category, unless there is an intention to humiliate a member of scheduled caste or scheduled tribe for the reason that victim belongs to such caste. Only in that case offense it will be considered as the offense. But सारे insults या सारे intimidations, मान लो छोटा मोटा लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस केस में किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उस चीज को हम SC/ST एक्ट के तहत ऑफेंस नहीं लेंगे. ऑफेंस तब लेंगे जब किसी इंटेंशन के साथ जानबूझकर उसी कास्ट के इंसान को टारगेट करके ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, right? The court said that in order to be considered as an offense, the insult should be specifically intended to humiliate the victim for his caste. मतलब रीजन ही होना चाहिए कि उसके कास्ट के लिए हम उसको ऑफेंड कर रहे हैं. उस केस में हम ऑफेंस को मानेंगे SC/ST एक्ट के तहत. The court said that object of the act is to punish violators who inflict indignities, humiliations and harassment to these caste, right? So this was again important for GS paper 1 also and GS paper 2 also. ये GS paper 1 society and 2 के लिए भी important है. So this was all for today. I hope you enjoyed today's session. I hope आपको आज का session अच्छा लगा हो. If you really enjoyed it, do not forget to like the video, share the video and subscribe the video with your friends and the other students who are preparing for UPSC CSE.